Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're all doing great. So today we are going to get knowledge about adverb and what is an adverb and how many its types in actual. So get start. Adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective and another adverb, a phrase or a clause. So एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन होती है, मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन का वर्ब है, ठीक है, कोई एक्शन है, उसको हमने प्रोमिनेंट करने के लिए हम बेसिकली एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ब को मॉडिफाइज करने के लिए, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कुक प्रिपेयर्स डिशेस क्विकली, ठीक है। ही इज़ अ वेरी फास्ट रनर, ही रन्स वेरी फास्टली। I have walked all through this estate. In the first sentence, the adverb quickly, and in second sentence, the adverb very, and in the third sentence, very modifies the adverb fastly. In the fourth sentence, the adverb all modifies the phrase through the state. Okay. So next one, adverb of manners. बेसिकली क्या होता है, द काइंड ऑफ एडवर्ब्स रिवील्स द मैनर्स इन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ शोन, ठीक है। मीन्स कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर उसे कहते हैं कि किसी भी नाउन का एक्शन को हम उस, ठीक है, उसको हम रिवील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन मूव स्लोली, द डॉग बार्क्स लाउडली, द लेबरर्स वर्क हार्ड, द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। ओके, सो नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स, एडवर्ब का मीन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, ठीक है, और प्लेस क्या होगा, किसी भी जगह के बारे में। सो एडवर्ब विच डिनोट्स प्लेसेस टू विच द एक्शन ऑफ अ वर्ब्स रेफर्स टू। ओके, प्लीज डोंट असेंबल ऑन अ वेरेंडा, the accident took place on the ring road, my son is settled in the USA, please don't spite here. Okay, so adverb of time, adverbs which reveals the time of action pertaining to the verb, means के जो पर्सन है, नाउन है, उसके जो एक्शन का टाइम मेंशन करने को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लाइक आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, सो डेली इज़ अ बेसिकली adverb of time. I sold my car yesterday. So over here, yesterday is an adverb. It is raining, so it's 6 a.m. So timing over here, the train arrived late by an hour. Okay, so adverb of frequency. Adverb of frequency are those adverbs which qualify the action of the verbs in a sentence to reveal the frequency of such actions. For example, I take bath twice in a day during summer, ठीक है, मीन्स कि वो वर्क जो फ्रिक्वेंटली बेस किया जाए। द PN इज़ नेवर लेट फॉर हिज वर्क, सो लेट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। द मिनिस्टर विजिट्स हिज constituency once in a month. Okay, so once in a month is basically a adverb of frequency. Okay, I go to supermarket once in a week. Okay, so once in a week is an adverb of frequency. The schools are inspected annually, so annually is basically is an adverb of frequency. So next one, adverb of degree. So what is an adverb of degree? Adverb of degrees are the adverbs which reveal the degree or nature of the action pertaining to the verbs, means कि adverb की वो डिग्री जो किसी भी noun के nature of actions को pertain करे, उसको हम adverb of degree कहते हैं। For example, he is too weak to carry the load. Okay, I am fully prepared to appear for the interview. The construction's work is almost completed. I am extremely sorry for the delay. It is my total responsibility. Okay, means कि किसी भी noun या किसी भी person की स्टेमिना
को, किसी भी वर्क स्टेमिना को हम बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है, जो रिवील करता है डिग्री या नेचर ऑफ एक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ एक्शंस को pertaining to the verbs. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.